भारत में लोकतंत्र की नींव 3 स्तंभों पर टिकी हुई है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। लेकिन जब सरकार की शक्तियां बेलगाम होने लगती हैं, तो क्या न्यायपालिका उसे रोकने में सक्षम होती है? आज हम आपको बताएंगे कि कैसे हाल के फैसलों में सुप्रीम कोर्ट सरकार के खिलाफ एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा हो रहा है। क्या न्यायपालिका सरकार की मनमानी पर रोक लगा सकती है, या फिर सरकार न्यायपालिका को भी अपने नियंत्रण में लेना चाहती है? हाल के फैसले जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई। दोषी नेताओं पर आजीवन प्रतिबंध का मामला। भारत की राजनीति में कई बड़े नेता भ्रष्टाचार और आपराधिक मामलों में दोषी ठहराए जा चुके हैं, लेकिन वे फिर भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई थी, जिसमें मांग की गई कि आपराधिक मामलों में दोषी नेताओं पर आजीवन चुनाव लड़ने का प्रतिबंध लगाया जाए। लेकिन केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए कहा कि ऐसा प्रतिबंध उचित नहीं होगा। सरकार का कहना था कि संसद को ही यह तय करने का अधिकार है कि किसी नेता को कितने समय के लिए अयोग्य घोषित किया जाए। सोचिए, अगर कोई साधारण नागरिक किसी अपराध में दोषी पाया जाता है तो उसके लिए कई कठोर नियम होते हैं, लेकिन अगर कोई नेता भ्रष्टाचार या घोटाले में पकड़ा जाए तो वह कुछ सालों बाद फिर से चुनाव लड़ सकता है। क्या यह लोकतंत्र के लिए सही है? सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की इस दलील को हल्के में नहीं लिया और पूछा, क्या आप चाहते हैं कि अपराधियों को फिर से जनता की सेवा करने का मौका मिले? महिला न्यायाधीशों की बर्खास्तगी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्ती। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने 2 महिला सिविल जजों को उनके काम के प्रदर्शन का हवाला देते हुए बर्खास्त कर दिया था, लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो न्यायाधीशों बीवी नागरत्ना और एन कोटेश्वर सिंह ने सरकार और हाईकोर्ट को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने कहा कि इन महिला जजों की बर्खास्तगी पूरी तरह मनमानी थी। उन्हें अपनी गर्भावस्था और पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, लेकिन यह बर्खास्तगी का कारण नहीं हो सकता। क्या यह न्याय है? जब देश में महिला सशक्तिकरण की बातें होती हैं, तब महिला जजों को बिना ठोस कारण के उनके पद से हटा दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिनों के भीतर इन जजों की बहाली का आदेश दिया और सरकार को फटकार लगाई कि वे न्यायपालिका के काम में अनुचित हस्तक्षेप न करें। क्या सरकार न्यायपालिका को अपने नियंत्रण में लेना चाहती है? सुप्रीम कोर्ट के इन फैसलों से यह सवाल उठता है, क्या सरकार को न्यायपालिका का यह स्वतंत्र रवैया पसंद नहीं आ रहा? बीते कुछ सालों में हमने देखा कि सरकार ने कई बार न्यायपालिका के अधिकारियों को कम करने की कोशिश की। उदाहरण के लिए, न्यायाधीशों की नियुक्ति पर सरकार का दखल। सरकार चाहती है कि जजों की नियुक्ति में उसकी ज्यादा भूमिका हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे अस्वीकार कर दिया था। संविधान में बदलाव की कोशिश। सरकार बार बार कुछ संवैधानिक संशोधन लाने की कोशिश करती है, जिससे न्यायपालिका की स्वतंत्रता कम हो सकती है। सरकारी फैसलों पर कोर्ट की सख्ती। जब सरकार ने विवादास्पद कानून लागू किए, जैसे कृषि कानून और नागरिकता संशोधन कानून यानी कि CAA, तो कोर्ट में इसकी वैधता को चुनौती दी गई। यानी सरकार चाहती है कि कोर्ट उसके फैसलों पर सवाल न उठाए, लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या भारत की न्यायपालिका इतनी कमजोर है कि सरकार के दबाव में झुक जाएगी? न्यायपालिका बनाम सरकार, आगे क्या होगा? आज की स्थिति यह है कि भारत की न्यायपालिका सरकार के हर फैसले पर पैनी नजर बनाए हुए है, लेकिन सवाल यह है कि यह संघर्ष कितने दिनों तक चलेगा। क्या सरकार अपने फैसलों में सुधार करेगी? क्या सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच का टकराव और बढ़ेगा, या फिर न्यायपालिका पर दबाव डालने की कोशिशें तेज होंगी? अगर न्यायपालिका सरकार के खिलाफ खड़ी होती रही तो क्या सरकार कोई ऐसा कदम उठाएगी जिससे कोर्ट का अधिकार सीमित किया जा सके? क्या भारत का लोकतंत्र खतरे में है? भारत का लोकतंत्र हमेशा से न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर टिका रहा है। अगर न्यायपालिका कमजोर होती है तो आम नागरिकों के अधिकारों पर भी खतरा मंडराने लगेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले बताते हैं कि अब भी न्यायपालिका सरकार के खिलाफ खड़े होने की हिम्मत रखती है। अब यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस लोकतंत्र की रक्षा करें। क्या आप चाहते हैं कि न्यायपालिका अपनी स्वतंत्रता बनाए रखे? अगर हाँ, तो अपनी राय नीचे कमेंट में दें। Nothing is a greater anathema to the world of commerce as unpredictability. This constant flip-flop, change, etc. is actually a greater danger. Two parties have decided that we can go to court. I don't think that argument, the last argument works, because the commercial world also wants certainty in litigation. Yes, and not continuity of litigation. Well, that's the argument of the other side is, why do you expect courts will not be able to be appropriately apply the law, even if it is modification, in cases where there is need and strictly within the four corners of law, without going into the merits of the matter, without going into the examining the
examining the, rewriting the award. Yes. In those limited set of, they are not asking that it can be, court can sit in a judgment in an appeal. And as was suggested in some of the cases, in one or two cases, there is suggestion, but most of the advocates on the other side have never said that we should become the appellate body. Nobody said that, except probably in public policy matters relating to NHAI. Well, the question is not as to what is desirable. Nobody's argued It is a that. question, Millet, of what is the law. That's what I am on. Let me put it very clearly. As far as commerce is concerned, that may not be. The first argument of yours, No, Millet. that if we have adopted the unilateral model Yes. and the intent of the legislature was Well, to exactly take up the unilateral model, then setting aside doesn't include modification. To some extent, maybe right. So look, again, just as a legal framework is just put it back skeleton or legal framework. You can't add words to a statute. You can give. All. I'm just finishing my point. Second is you can read modification into setting aside if the words itself have some ambiguity and permit for that. I'm argued that is not the case. That is not possible. There is no ambiguity in the meaning of the word setting aside. Through no process of interpretation can we read variation into the setting aside. That's the second point. Third point, Millet, is whether the greater includes the lesser. Millet. In another way, Millet, I suppose, of saying that the word setting aside may include variation or modification, even if the golden rule of interpretation, which is read the words as they are, is not to be taken, and that was also argued by the other side, is through some form of purposive interpretation, that you interpret the words of a statute so as to effectuate the policy behind it. That has been a substratum of a large part of the argument of the other side. But I'll say some things to that. One, that principle can only be adopted when there is an ambiguity in the words of a statute. It cannot be adopted generally. Where is the ambiguity in the word setting aside? It's as clear as daylight. It's clear, Millet, to us in 85, in 96, to this court, Millet, in Hakeem, to Redfern and Hunter, to every country across the world, which was given a separate power for modification. So they know what setting aside means. It is clear to our legislature in 1908 in the CPC when they say there's a different power. To all authorities so far, these two powers have been seen as distinct, and setting aside means setting aside. It's English language. So therefore, there is no scope of a purposive interpretation. Then if my note is to be seen, then assuming a purposive interpretation is to be adopted, then two things need to happen. First, you determine what is the policy of the act. And second is to ask yourself as to whether the interpretation being sought to be offered will further that policy of the act. Both things, Millet, in purpose of interpretation, my laws will do these two tests. What is the policy of the act? Very often it has been said that, look, it becomes very expensive, very expensive. No part of the arbitration exercise is to make it cheaper for parties. It is well known that arbitration is more expensive. What is important and has always been stated in every judgment of this court, including the Stamp Act judgment, if need be, I'll refer to it, is the policy of the Arbitration Act is twofold. One is minimum judicial interference, embodied in Section 5. And the second is expedition. Expedition and non-interference. And Millet, I would dare say that non-interference is a concept which is in furtherance of expedition. But if non-interference is the purpose of the act and expedition is the purpose of the act, one, I would say, leave the expense of the parties away. Parties know when they choose that they're going to arbitration, that they may come with a situation where the award is set aside and they'll have to restart it. They do that in commerce. It is not a problem. It is parties well know that. Yet they choose to opt out of a general judicial system and go to arbitration. So let's expense, please leave out of it. The consideration of expense, parties are presumably factored into their own mind when signing that contract, because it is party autonomy. Parties know what they're doing. So the question is, Millet, of expedition. Millet, if legislature says Section 5 in furtherance of expedition, I dare say the question will then come to the second part of the purpose of interpretation test is whether modification and the power of modification will expedite the process or further retard it. By reference to three examples coming from other side, think, look in my case, modification would have quelled the litigation there and then, forgets the fact that it would, I repeat, in this court it may quell it because there is no further ground of appeal. If that power is to be exercised by every single trial court, even the high courts will exercise a trial jurisdiction when they have original side. But it is also exercised
by district courts in every country. In every court in this country, there will be an application of a modification, no matter what guardrails my Lord gives of curable, incurable, this, that. Every party will say, well, look, this is a curable defect, cure it. You can do it. The other party will say either you should not have cured it, it is inappropriate, or it is not a curable defect. There will be one round of litigation which will go on that alone. Because I give again the salutary example of That may not be correct for the simple reason the power to modify will only arise in case the first the court forms a conclusion that the award is patently wrong or contrary to public policy and therefore it's liable to be set aside. First you have to form that conclusion. और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।